Good morning students. How are you all? अच्छे हैं सभी? सबने होमवर्क किया? Have you done your homework, writing and learning also? Tell me first about, have you learned properly? हाँ देखिए, राइटिंग ही नहीं, मुझे लर्निंग वर्क भी चाहिए. डिम्पल, हैव यू लर्न बेटा? So once again, good morning all of you. I welcome you in my English grammar class. Okay. So what have we done yesterday? क्या किया था बेटा हमने कल? क्या किया था बेटा हमने कल? Open your book and notebook. 2 question exercise. Good beta. Class 4th. Tell me date. Today's date. Do you know? It's 19th August 2021. Okay. Which day is today beta? Day. Which day is today? It's Thursday. And spelling? Speak everybody. Thursday. Thursday. Clear? So are you ready now? Page number 12. We have done 2 questions from this exercise, right beta? Today we will start from question number C. So firstly write the chapter number 3 from your English grammar book. First exercise. Fill in the blanks. Okay, see. May I keep your mind in the class beta. May I drink dash in class. So what will come here? Tell me quickly. क्या आएगा बेटा? क्या आएगा यहाँ? Yuvika, Anushka, very good beta. You have given right answer. And what about the rest students? दिमाग लगाइए बेटा. Water. Okay. May I drink water in class? क्या मैं क्लास में पानी पी सकता हूँ? Okay. Now D.
the dash give us wool. सेकेंड क्लास से हम पढ़ते आए हैं ये, इवन फर्स्ट क्लास से. वी आर स्टडिंग दिस line, only line from first class. Now tell me, what will come here beta? Very good Mohit, spelling wrong हो गई है, but good try. Sheep, not God. जोगेंद्र, what are you doing बेटा? God कैसे आएगा? God से आपको क्या मिलता है? wool मिलता है. Sheep. So sheep is the right answer. Okay. E. Beta, we have done this exercise now. अच्छा सेकेंड एक्सरसाइज का. ओके, सो टेल मी क्लियरली ना बेटा. सेकेंड एक्सरसाइज वी हैव टू डू बेटा, है ना. राइट, सेकेंड circle the words that are nouns. That are, हाँ यहाँ थे हम. ठीक है बेटा. सी हो गया था ना. अब क्या करना है हमको? डी, है ना. चलिए सी करा देती हूँ मैं फिर से. बात, गो, वॉक, किचन, रूम. Okay, now tell me in this sequence nouns. Bath, go, walk, kitchen, room. Tell me the nouns. Tell me first. It's okay if we have done. It's okay. Tell me again. Walk? No, not at all. Bath is a verb, go is a verb, walk is a verb, kitchen is a place name, that's why it is a noun, and room is also a place name, that's why it is a noun. Okay beta? D. He, she, you, Neha and Ram.
टेल मी क्विकली, ही, शी, यू, नेहा, राम. नेहा, राम, कनिका, वेरी गुड, इट्स राइट. जोगेंद्र ऑल्सो राइट बेटा. सी, ही एंड शी एंड यू, ऑल दीज आर प्रोनाउंस. ठीक है, क्या है ये प्रोनाउंस है. एंड नेहा एंड राम आर नेम्स, दैट्स वाई दीज आर व्हाट, क्या है ये. प्रिंस, क्या है ये. नाउन. अंडरलाइन दीज नेम्स. हाँ, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेज. ग्रेज. filled, filled, short, short, eyes, eyes, noise. Okay, now tell me nouns quickly. Eyes, right, and filled, right beta. And okay, grace is a verb, filled is a noun because it's a name of a place. ठीक है. Short is adjective, eyes are noun. Okay, so only these two words are noun in this sequence. Okay beta. Now F. Again short, short, air, water, cloud, rain. Tell me beta in this sequence noun. बताइए बताइए जल्दी बताइए बेटा. In this sequence beta, air, water, cloud, rain, all these are nouns. Okay, because these are the names of related environment. Okay, video is not coming, check your video beta. Is it open or not? Now next question. G. Hair, talk, sing, sing, boy, dance. Tell me nouns in this sequence. Boy, right answer beta. Kanika, you are right. And see, hair is noun. Okay, talk, sing and dance are verb. ठीक है, ये verb है
और बॉय इज अ नाउन. ओके. And here are the name of our body part. Okay beta. Now see next question. Pencil, dancer, sari, whipping, and went. Tell me nouns in this sequence. Pencil, right? And try to found now we will proceed to next exercise. चलिए. So one paragraph is given in your book on page number 13. In that paragraph you have to underline the nouns. Okay. Story, it's a story. Okay beta. चलिए लिखा हूं मैं आपको. अंडरलाइन the nouns in the following story. Priyanka start writing beta. Kanika, what? No ma'am. फटाफट हाथ चलाइए बेटा, है ना. प्रियंका इज a beautiful girl. She lives in Delhi. She is 10 years old. She is 10 years old. She wears neat and
neat and clean dress. She is, फटाफट हाथ चलाइए, मेरे साथ साथ लिखिए. She is going to market. She likes to eat pizza. Burger. And patties. ठीक है. She is but I am raising the downside work. Okay, I hope you have done. Is there anybody who have not done? Patty, she is my best friend. She is my best friend. In the class. In the class, she is very fair with small blue eyes. She is good at singing, all her friends
बोल बोल के लिखिए, है ना, जैसे मैं बोल बोल के लिखती हूँ वैसे ही आप भी बोल बोल कर लिखिए, स्पेलिंग याद होने लगेगी बेटा आपको, लाइक हर। ठीक है, आई हैव रिटन दिस स्टोरी एंड यू डू फास्ट बेटा, विल टेक अ स्क्रीनशॉट and write letter. Okay, now I am telling you nouns in this story. Okay, so Priyanka is a name. Okay, girl is a noun and Delhi is a noun and dress is a noun, market is a noun, pizza, burger, patties, okay, and friend, class, blue, eyes, and friends. So underline these words quickly beta. Done? After doing this, write your homework. Learn and write. लर्न क्या करेंगे इसमें, लर्न का तो नहीं है बट अंडरस्टैंड तो करेंगे आप. You will understand and write your CW. Okay? Understood beta? Do fast. If you have any doubt, you can ask me बेटा. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप फटाफट. ये जिसको भी हमने अंडरलाइन किया है वो सभी नाम है. क्या है वो सभी नाम है. वो किसी चीज़ के, किसी बॉडी पार्ट के, किसी प्लेस के, किसी चीज़ के, किसी ड्रेस के. ड्रेस भी एक चीज़ ही है. तो ये सारे नाउन हैं. ठीक है बेटा, इसीलिए हमने इनको अंडरलाइन किया है. क्लियर? फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन. ठीक है, फ्रेंड्स आर कॉमन नाउन. ठीक है, ये कॉमन नाउन है बेटा. कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं ना. Delhi is a place of is the name of place. Blue is the name of color. Okay. और क्या है? प्रियंका is the name of
पर्सन, इट्स द नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, एंड दीज आर नेम ऑफ बॉडी पार्ट, दैट्स वाई ऑल दीज आर नाउन्स. सो आज के लिए बेटा इतना ही. कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गुड डे.